Hello guys, then there is another very interesting problem or and concept which is involved here कि there is a vertical ring. This is in the vertical plane. There is a ring and वहाँ से एक topmost point से ring के topmost point से O वहाँ से we connect different threads to different points in the periphery of the ring and simultaneously we release three smooth beads. कोई friction नहीं है यहाँ पे. 3 स्मूथ बीड्स को रिलीज किया जाता है अलॉन्ग 3 डिफरेंट पार्ट्स. एक ये. तो दिस इज एट जस्ट द मिड पॉइंट. दिस इज समथिंग लोअर देन द मिड पॉइंट एंड दिस इज जस्ट द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट. तो हमें पूछा है कि विच बीड विल रीच द फास्टेस्ट. ठीक है, तो वी हैव टू अरेंज देम इन द ऑर्डर 1, 2 and 3. तो pause the video here, give it a try, arrange your order and then come back and check the solution. तो देखिए, the very important and very beautiful result here is कि all of them will reach the end points at the same time. और ऐसा क्यों हो रहा है? Let's see. Suppose this rope is attached say at an angle of theta. तो ये अगर थीटा है तो I can very well say कि इस पे ग्रेविटी G नीचे लग रहा होगा and this angle is also theta. Along this rope, this component of the gravity, acceleration due to gravity, is g cos theta, and this is g sin theta. But g sin theta will be balanced by the normal reaction between the bead and the string. तो ये g sin theta will be nullified. इधर कोई नहीं होगा, सिर्फ इधर की तरफ फोर्स होगा. तो the net acceleration is g cos theta. Now another important thing is if I connect these things, this is theta. So ये रेडियस है पूरा r. तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी 2 times of r cos theta and this is the displacement. Acceleration is g cos theta. So I can write s is equals to u2 के सापेक्ष कर along this direction and release from rest है तो u 0 है अपना. तो 2r cos theta 0 plus half a t square and cos theta को तो हम कैंसिल होते दिख रहे हैं. तो वहाँ से हमें मिल जाएगा कि t इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बेसिकली. तो मतलब आप अगर इसको इतना नीचे तक आने दे या फिर इधर से इधर तक जाने दे या फिर आप इधर से बहुत नज़दीक तक बस इतना जाने दे, हर किसी में सेम टाइम लग रहा हो. तो this is just a concept. It is very useful in very different type of problems which I'll cover in the next segment. So I'll call this as #1 time, which involves time of journey. So time of journey type के problems में this is the first video I'm making in the series, and next video I'll come up with the application of this. Thank you very much.